Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंत में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, थैंक यू अनुभा। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अनुभव। Thank you, Amit. Domestic benchmark indices log losses. Sensex sheds over 200 points. Nifty settles below 25,000. NSE to discontinue weekly options contracts for Bank Nifty, Nifty Midcap Select, Nifty Financial Services in November. And global crude oil prices fall. Brent crude is trading at $78.71. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 200 अंक से अधिक का नुकसान, निफ्टी 25,000 अंक के स्तर से नीचे दर्ज। नवंबर से एनएसई में बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के साप्ताहिक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बंद किए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट क्रूड $78.71 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की गिरावट से 230 अंक गिरकर 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.1% के मामूली नुकसान से 34 अंक गिरकर 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। Domestic benchmark indices ended lower today in a range-bound trading session. The Sensex declined 230 points or 0.2% to close at 81,381 and the Nifty ended with marginal loss of 34 points or 0.1% to settle at 24,964. At the National Stock Exchange, 83 companies hit their 52-week high, 24 hit their 52-week low. The broader market at the Bombay Stock Exchange outperformed benchmark indices. The mid-cap and the small-cap both rose over 0.4% each. In the Sensex index, 16 out of 30 companies ended higher. Among the top gainers, HCL Tech gained 1.6%, Tech Mahindra surged 1.5%, and JSW Steel added over 1%. Conversely, among the laggards, TCS and Mahindra both lost over 1.8% each. ICICI fell 1.6% and Maruti as well as the Power Grid shed 1.3% each. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors logged gains. Among the top gainers, metal sector rose 1.2%, healthcare gained 0.8% and oil and gas added 0.6%. In the top laggards, realty declined 0.7%, BankX slipped 0.6% and auto lost 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,143 companies advanced and 1,751 company shares declined, while shares of 117 companies remained unchanged. Vishal, we see this is the second week now. Again, if you look at the whole week, not just today's trade, both Nifty 50 and the Sensex have closed in the red, and this seems to be a pattern. Last week also we saw the same thing happening. What was the reason? अनुभव, चर्चा से पहले अगर मैं रुपए की बारे में जानकारी दे दूं तो शायद पूरी चीजें सबको और भी हम समाहित कर पाएंगे। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे लुढ़ककर 84 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 102.9 के स्तर पर रहा। जी विशाल। Now, Anubha, you're right. This is the second consecutive week, but there is, looks like there's some light at the end of the tunnel, because when we look at this fall as well, this seems to have gradually slowed down and is now making some, analytical sense, I would say. As far as reasons are concerned, reasons almost remain the same, which they were last week as well. One is global cues. Two is data coming in
from various aspects. When I talk about global cues, the cues in the geopolitical trends, there's nothing positive coming in from there when we are talking about the West Asia conflict. And last 10-15 days have been of very heightened tensions between the major players, Israel and Iran as well. This has led to the hike in oil prices. So that seemingly is having a sort of an overlasting impact on the market. And it's just not the Indian market. It's about the other Asian markets, Yes. the European markets, even the US market as well. Also, apart from the geopolitical global cue, are the cues coming in from advanced economies like the United States. The data coming in from the United States has been mixed in the last 2 weeks or so. In between, we heard some good news, but then if we talk about today, then the unemployment data which has come in is not good. The inflation data is also a bit of a cause of concern because it is moved beyond the comfort zone once again. So the US Fed is expected not to continue with the stance which they took in the previous previous meeting which they had. There are hopes that perhaps some sort of maneuvering room US Fed will have, but then it looks like if this trend of data set coming in from the US economy continues, then clearly, it looks like it'll not be much very interesting aspect from the US economy, but we'll have to wait and watch on that. Interestingly, on the domestic front also, there are certain cues which are really important now. As far as the inflation data is concerned, pretty much on the positive side. I was coming to that. Do you think the investors are a little worried that the inflation is not cooling fast enough? Well, there are two ways of looking at this thing. Either the glass is half full or glass is half empty. Okay. From an investor's perspective, from some of their perspective, it can be said that yes, it is not cooling fast enough. But from the overall regulator's perspective and from the government's perspective, it looks like, the regulator and the government has been successful in containing the inflation within that comfort level zone, the 4% target which was set there. Well, there are concerns vis-a-vis, the food items and the essential commodities there as well. But then, this is a festival season, so it's likely that once this dies down, we will have, some positive cues coming in from there as well. But apart from that, there are two more reasons when you spoke about why it is happening for the second consecutive week. Quickly, one reason is the concerns were raised almost 3-4 months ago as well in terms of the overvaluation in the market. So that seems to have played a role behind the scenes. On the face of it, everybody was looking at this particular set of data or those cues or these cues, but then behind the scenes, when it all started boiling up, that overvaluation which was there in certain sectors or certain stocks, that seems to have, played a bit of a role out there. That's one. And the second important part is the results coming in from the companies. Now, that is going to be really important from here onwards. Next week, a lot will depend upon how the market reacts to various results coming in. And this is all a mixed bag. So things might not go in the green immediately, but then if they continue to have a very stable movement in the red as well, then it is a positive sign that yes, okay, the indices on both Nifty and BSE have the wherewithal to go ahead and break that barrier and once again start the upward So not journey. all is lost. तो विशाल, जैसा आपने बताया कि जो बाजार की दशा है या शेयर काफी ऐसा लग रहा था कि शायद ओवर वैल्यूड है, क्या सिर्फ यही वजह है? दूसरी जो चीजें आपने बताई, इसके साथ साथ एक चीज आंकड़ों के बारे में आपको और बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड से भी जो रिलेटेड आंकड़े हैं वो हमको बताते हैं कि तकरीबन 2.97% बढ़े हैं सितंबर के दौरान, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान था हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, जिसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत प्रमुख खरीदार हुआ करते थे। ये जो 3%, लगभग 3% अगर म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहे हैं अपने पार्टिसिपेशंस को, तो क्या ये माना जाए कि अब चूंकि वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है या हमारा शेयर बाजार एक रेंज बाउंड मोड में आ गया है या आना पड़ा है? और तीसरा, आपने जैसे कहा कि नतीजे, अब हम कुछ ही दिनों में नतीजे देखने शुरू कर देंगे आज के बाद,
ये सारी चीजों का मिला जुला रुख जो है वो बाजार की दशा और दिशा एक सीमित दायरे तक सीमित कर रहा है। देखिए, पहले अमित जी मैं म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूँ। आपने उन आंकड़ों की बात की और मैं इन आंकड़ों पे नजर डाल रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आप देखिए कि 67 लाख करोड़ रुपए जो म्यूचुअल फंड में है, उसमें से लगभग 22,000 करोड़ रुपए अलग अलग सेक्टोरल फंड्स में है जी। और सेक्टोरल और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, खासतौर पे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही नैरोड वे है इन्वेस्टमेंट का। यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और खासतौर पे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो घरेलू निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस सेक्टर में ऑपरेट वाली कंपनी करने वाली कंपनीज में बहुत बढ़िया है। उस सेक्टर से संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं सरकार की, उनमें उनका विश्वास बरकरार है। और इसका सीधा फायदा जो सेक्टोरल कंपनीज हैं उनको भी मिलता है, और उसका नतीजा फिर हमें जो सेंसेक्स के इंडाइसेस हैं उन पे भी देखने को मिलता है और ओवरऑल ग्रोथ में भी देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स का ये जो डेटा है ये इंगित करता है इस ओर, ये दर्शाता है कि भाई जो अनुभा जी कह रही थी कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज वेल। बिकॉज अल्टीमेटली हमको ये समझना होगा कि हमारी जो फाउंडेशन है इकोनॉमी की, हमारी जो फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट की, वो केवल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे नहीं बनी है, वो केवल ग्लोबल क्यूज से नहीं चलती है। उसमें जो घरेलू निवेशक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और पिछले कुछ सालों में उनकी भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है। और वो भूमिका ऐसे समय में जब मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाता है, जब हमें वो जो इंडाइसेस हैं वो लाल में जाते हुए दिखाई देते हैं, तब हमें ये पता चलता है दरअसल कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों का डेटा अगर आप देखेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, एफपीआई जो हैं, वो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉल हो रहा है। उसके कारण हैं ग्लोबल क्यूज हैं, उसके कुछ कारण ये भी हैं कि चाइनीज जो इकोनॉमी है उन्होंने कुछ फैसले लिए, और कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जिनको शायद उचित लगा होगा कि यहां से थोड़ा पैसा निकाल के वापस चाइना में लगाया जाए, क्योंकि वहां से शायद बेहतरीन मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है, और थोड़े बेहतरीन मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। तो ये सब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलता रहता है, और वो उनके पैसे आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। लेकिन जिसे बेडरॉक कहा जाए इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन अर्थव्यवस्था का या स्टॉक मार्केट का, वो हमारा घरेलू निवेशक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो। और ये दोनों चीजें दर्शाती हैं कि कई बार कुछ सेक्टर्स में ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भरोसा जब तक मार्केट के सेक्टर में बना हुआ है, जब तक बना रहेगा, तब तक कोई बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को बाजार की दिशा तय कर रहा है। नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही बाजार की दिशा नहीं तय कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कम समझदार मान लें। मैं दूसरे शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, मैं कम समझदार मानने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत सोच समझकर पैसा लगा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत रिसर्च करके पैसा लगा रहा है। और हाल फिलहाल में जो भी फैसले लिए गए हैं रेगुलेटर्स की तरफ से, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जो हित हैं उनकी भी अच्छे से सुरक्षा करते हैं। यानी कि हम एक रेगुलेटेड प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ थोड़ी सी अड़चने रहेंगी, चाहे ग्लोबल क्यूज की बात हो या फिर ओवर वैल्यूएशन की बात हो, और वो हर शेयर बाजार में, हर मार्केट में देखने को मिलेगा। The fact that you're talking about some of the decisions that have been taken by the regulators lately, will come to that. But before that, I want to ask you, because we were talking about sectoral indices. We see today that auto sector has lost about 0.4%. Now, this is a festive season. This is the time, when auto sales are normally, at their highest, or rather auto sales gain. What is the reason that we're seeing this decline in auto sector right now? Well, Anubha, this is something which has been in the works for quite some time. Auto sector has been a laggard for quite a few months, I would say. There have been upticks in between, and those have been very positively taken as well. But for the auto sector, it looks like things are not coming back on track as expected. And that is why when the entire, bull run transforms into a bear run, then those who are at the end of the rope or end of the line, they seem to take the maximum run. And that is why we see one of the sectors which seems to have, sort of taken the fall a little bit
a little bit harshly, I wouldn't say much harsh, but a little bit harshly in these 2 weeks is the auto sector, despite the fact that this is a festive season. So let's hope that, once this We extended... still have a month. Yeah, almost once a this month. extended festive season is over, perhaps the auto sector will bounce back, come up with some good news, and we can simply then juxtapose it with the overall growth movement as well. रुपया में अगर आज देखें, आज रुपया काफी दबाव में नजर आया है, जबकि अगर फॉरेक्स की बात करें तो 700 बिलियन मतलब 700 खरब डॉलर से ऊपर का रिजर्व होने के बाद अगर रुपए 84 रुपए, आज काफी बड़ी गिरावट रही इसमें। इसके पीछे कोई खास वजह ये तात्कालिक था या कहीं ना कहीं कुछ और दबाव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अमित जी, इसे तात्कालिक ही माना जा सकता है, क्योंकि आप समझिए जब करेंसी ट्रेड की हम बात करते हैं तो उसमें केवल करेंसीज की बात नहीं होती, केवल इकोनॉमीज की बात नहीं होती, बाकी जो ग्लोबल मेजर कमोडिटीज हैं, और यहाँ पे मैं एक बार फिर से तेल की चर्चा करना चाहूंगा। तेल इसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि तेल का आयात निर्यात और एनर्जी सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते हैं, उसका कैसे असर रहेगा, कैसे वो चलेगा। और खासतौर पे अगर भारत की बात करें तो हम इस वक्त वेस्ट एशिया क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमारा लगभग 50% से ज्यादा जो एनर्जी निर्यात आयात है वो उसी इलाके से होता है। यानी कि अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे जो एनर्जी आयात है उस पर कुछ न कुछ दबाव तो जरूर पड़ेगा। और वो दबाव अब क्योंकि वो सिचुएशन इसे कहा जाए कि एक इस तरह से बॉयल अप हो रही है कि उसमें पॉजिटिव क्यूज बहुत कम दिखने को मिल रहे हैं, तो उसका असर धीरे धीरे मार्केट पे पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि आज जो रुपए में गिरावट देखी गई उसे हम तात्कालिक मान सकते हैं। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, आपने खुद ही उन आंकड़ों का जिक्र किया जो फॉरेक्स रिजर्व्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि आरबीआई के पास जो सेंट्रल बैंक है उसके पास भरपूर कुशन है, खजाना है भरपूर, उसके लिए चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। और रुपए की गिरावट कोई पहली बार नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और हर बार जब वो पहली बार 81 के पार गया था तब भी हमने कहा था कि बहुत गिरावट हो गई। जब 82 के पार गया तब भी हमने कहा कि बहुत गिरावट हुई। 83 के पार भी यही बात हुई थी, अब 84 के पार भी हम यही कह रहे हैं, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। Moving on, the National Stock Exchange NSE announced yesterday that weekly derivatives options contracts on Nifty Bank, Nifty Midcap Select and Nifty Financial Services will be discontinued. This decision by the NSE has been taken to comply with the new rules issued by the Securities and Exchange Board of India, SEBI, earlier this month for trading in futures and options. SEBI has said that it will allow exchanges to offer weekly options expiries only on one index. Earlier this month, the Bombay Stock Exchange announced that weekly derivatives contracts of Sensex 50 and Bankex would be discontinued from November 14th and November 18th. Only Sensex weekly derivatives contracts will be available for trading. And SEBI had announced these series of reforms with an aim to enhance investor protection and market stability with the derivatives segment. Vishal, if I want to, if I were to ask you from a common investor's point of view, from a retail investor's point of view, what does this mean, this decision? This is a very, very, very important decision from a common investor's point of view. I'm calling it really, really important because of the fact that, and this is not one-off. This is in a series of decisions, informed decisions, which are being taken by the market regulator SEBI. I'll take you back almost 2 months, and wherein the SEBI had issued some guidelines for the influencers in the market. Those were aimed clearly at investor protection. Specifically the protection of small investors, the retail investors whom we term as. Their number has been swelling up in the past 3-4 years. And just to ensure that they make informed decisions, they're not trapped in the data mumbo jumbo of the Sensex or the share market. The regulator, SEBI, had started off by saying that one, the financial influencers will have to be very clear cut about what suggestions they give and what advice they give, and they will have to follow certain norms. That was the first step. The second step was this directive which came in on 1st of October, because futures and options is something which would require a lot more understanding of the market, more number crunching of the complex data sets,
And also, this is not something which is for a small time investor. Yes. These are for daily trading investors, or maybe those who've been in the market for quite some time, have the appetite to absorb a sort of perhaps a major chunk of loss as well if it happens on the market. And that is why the regulator came up with these regulations saying that on both Sensex, that is BSE, and Nifty, the derivative option trading will be done only in one. Derivative options contract trading will only be done in one particular segment, and Yes. that is why both BSE had already done it. Yes, and now the Nifty has also come up with the decision. Moving on, India and Lao PDR today signed 6 MOUs and agreements in various fields, including defense cooperation, customs, audiovisual, and preservation of heritage. India has also decided to provide financial assistance of $1 million to a project to improve nutrition security in Laos with food fortification through the India-UN Development Partnership Fund. On the second day of his visit to Laos, Prime Minister Narendra Modi met President of Lao PDR, Thongloun Sisoulith, in Vientiane today. During the meeting, the two leaders discussed bilateral ties and reaffirmed their commitment to further strengthen the close partnership. नफरत जानते हैं आईआईपी नंबर्स पर अगस्त के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन 0.1% के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि जुलाई के दौरान औद्योगिक उत्पादन 4.7% दर्ज हुआ था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के 3 प्रमुख कारक खनन में 4.3% की गिरावट रही, बिजली उत्पादन में 3.7% की गिरावट रही, जबकि निर्मित वस्तुओं के क्षेत्र में 1% की बढ़त भी दर्ज हुई। पूंजीगत वस्तुओं में 0.7% की बढ़त रही, निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं में 1.9% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.2% की बढ़त रही। हालांकि प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि दर में 2.6% की गिरावट हुई, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल क्षेत्र में 4.5% की कमी आई। ये आंकड़ों को अगर मोटे तौर पे देखें तो क्या हम ये माने क्योंकि बारिश मानसून का दौर था, शायद खनन तो इसकी वजह से ही ज्यादा कुछ रहा, और बाकी सारी चीजों में ये आंकड़े से मोटे तौर पे क्या आप मानते हैं, क्या विश्लेषण निकालते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक खनन की बात है तो जब जुलाई अगस्त का महीना आता है तो उसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिलती है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में 1% की ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक सॉर्ट ऑफ बैकबोन है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो वो जो ग्रोथ है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जहां तक बाकी आंकड़ों पे नजर डालें तो कैपिटल गुड्स में 0.7% का इजाफा है, और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.2% का इजाफा है। तो अगर ये आंकड़े जो है मतलब अगस्त के महीने के लिए आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हिसाब से दिखा रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद जो है आपका फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, यानी कि इनमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी धीरे धीरे देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं इन आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े को, जिसमें जो 1% की ग्रोथ हुई है वो ये दर्शाती है कि वो डिमांड जो है मार्केट में बनी हुई है, और अगर डिमांड बनी हुई है तो सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जी, रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग इकाइयों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी को निर्देश दिया है कि वह डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांग लोगों की सुविधा का ध्यान रखें। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भुगतान सेवा प्रदाता सभी डिजिटल भुगतान इकाई जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन को दिव्यांग अनुकूल बनाने में के लिए जरूरी बदलाव करें। ये भी शायद काफी जरूरी था, क्योंकि अगर हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर पर गुजर रहे हैं तो दिव्यांग लोगों के लिए भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए अमित जी, अब हम एडवांस स्टेज में हैं। डिजिटल जब हम टेक्नोलॉजी के यूसेज की बात करते हैं, और खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में, तो हम काफी एडवांस स्टेज में हैं। जैसे जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। तो मैं मानता हूं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज में हम विश्व में सबसे एडवांस इस वक्त कहा जा सकता है। और ये जब इस तरह के फैसले रेगुलेटर की तरफ से आने लगे तो आप ये समझिए कि वो रिफाइन करने की बात हो रही है, जागरूक हैं, काफी फाइन ट्यून करने की बात हो रही है कि हमने जो बेसिक्स हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं और उनमें बहुत बेहतरीन काम हम कर रहे हैं। अब जो छोटे मोटे कोने जो रह गए हैं, जो शार्प एजेस रह गई हैं, उनको थोड़ा सा शेपअप करने की जरूरत है। जी, नजर डाले थे एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। चीन के शंघाई कॉपोरेट सूचकांक में 2% और सिंगापुर के
स्टेज टाइम सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी में भी मामूली गिरावट रही। हालांकि जापान के निक्के में 0.5% से अधिक की बढ़त भी दर्ज हुई। हांगकांग का शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा। सत्र के दौरान फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.2% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US market, US stocks ended slightly lower yesterday following the release of higher than expected inflation and unemployment claims data. The S&P 500 fell 0.2%, Dow Jones Industrial Average lost 0.1%, and the Nasdaq Composite ended nearly flat. Vishal, you had already discussed, we discussed it at the beginning of the program, the US, inflation figures and unemployment claims data. But I want to, because we're talking about US and the inflation figures, and we were talking about the fact that the US Fed had, gone in for a 50 basis point cut. But if I talk about RBI, the meeting ended just 2 days ago. The repo rate has been kept, same. But the stance has changed from accommodative from withdrawal of accommodation to neutral. Do you think that's an indication of a rate cut pretty soon? Well, yes, nothing is, again, in previous shows on Market Mantra on this topic, I had said that nothing is stopping us from speculating and hoping. That's what we can do. But coming back to the facts, well, the very fact that the stance has changed from withdrawal of accommodation to neutral is a very big indication from the central bank that yes, we are making up our mind, but given the fact that the inflation figures remain in check, one. Two, the other conditions are met, both in terms of the global cues and what the other, central banks are doing worldwide. The central bank, Indian central bank, that is Reserve Bank of India, seems to be very amenable to the fact that in the next meeting, perhaps they will give it a more positive and more considerate thought in terms of, bringing down the rates. All that will again depend upon, how the economy moves from here in terms of growth, one, and two, in terms of inflation being brought under check, specifically the food inflation and the essential commodities there as well, because the Reserve Bank had on more than one occasion pointed out that they're concerned on that part. And we will have the CPI figures actually tomorrow itself. Yes. Moving on to commodities, oil prices fell today but were on track for second weekly gain as investors weighed the impact of damage caused by Hurricane Milton and escalating tensions in West Asia. In the global crude market, Brent crude was trading 0.8% down at $78.71 per barrel. And the US West Texas Intermediate was also trading 0.8% down at $75.19 per barrel when reports last came in. नफर डालें थे सरफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.9% बढ़कर 76,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। वहीं चांदी भी 0.9% बढ़कर 91,240 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर की आपूर्ति वाले किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.8% बढ़कर 75,943 रुपए और चांदी लगभग 1% बढ़कर 91,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। ये चांदी और सोने की कीमतों में जो अभी मजबूती है, ये त्योहार का सीजन आ गया है इस वजह से है या इसके पीछे और भी कारण हैं? क्योंकि पिछले बार भी हम ये सोच रहे थे कि चांदी और सोने में कौन पहले 1 लाख हो के स्तर को छूता है। देखिए, इसमें 2 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला तो क्योंकि त्योहार का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, उसके तुरंत बाद शादियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा, तो लाजमी है कि प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दूसरा, सोना हमेशा एक हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता है और इस वक्त जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके चलते केवल इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस इसको हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये 2 बड़े कारण हैं और इनसे बड़ा कारण कुछ नहीं हो सकता कीमतों में बढ़ोतरी के। चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic benchmark indices log losses. Sensex sheds over 200 points. Nifty settles below 25,000. NSE to discontinue weekly options contracts for Bank Nifty, Nifty Midcap Select and Nifty Financial Services from November. And global crude oil prices fall. Brent crude is trading at $78.71. And that's it in this edition of Market Mantra. Do remember to join us tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, Namaskar. Market Mantra.